But type in the chat window, how was it? Just waiting to hear from you all. It was nice. Thanks, Tirtha, for sharing it. People who have joined us now, just I'm trying to understand, आपका आज का दिन कैसा रहा? How was the day today? Just go ahead, type in the chat window, कैसा रहा आज का दिन? और क्या नया किया आपने? I'm eagerly waiting to hear. Good, I see a few more. Valjinder says, good has been Sunday. It was relaxed. Awesome. Thank you, Valjinder, for sharing. Vaishali says, nice. Tirtha says it was nice. Jyotsna says, busy but relaxed. That's awesome. Okay, Kavita says, had relationship issue. So, Kavita, today, heal the relationship issue with the greatest humanity thing that we're going to practice today. And that's something which is going to be a powerful thing. And people, I have sent out the message. So I've asked you to get a loose paper, a pen which you can write through, and a matchbox, and a bowl. It can be steel or whatever it is, but it's going to help for a lot of healings that we're going to do today. So I pick paper, pen, matchbox और bowl ले आइए और हमें ये सारी चीजें चाहिए होंगी आज के सेशन के लिए. Pratibha says, morning I was feeling very low energy due to cloudy atmosphere, but after 10 a.m. I'm feeling better. That's awesome. I know weather is getting a little difficult or different or cold for a lot of you. So that's how it's gonna be. Awesome. Okay, so let's start our session. It's already 5 minutes. We are into the session. And I want you all to go ahead, sit straight, close your eyes, and let's go ahead and do the invocation, because this is where we are going to go ahead and invite the divine energies to be with us. So just go ahead, close your eyes. And let's say mentally, I invoke the divine presence of the Supreme God, the divine energies, the healing energies, to be present here in this moment to help me, to heal me, to guide me, and to protect me. यहाँ इस समय इसी क्षण मैं दिव्य शक्तियों का आह्वान करती हूँ जो यहाँ इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा संरक्षण करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए. ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहती हैं. Just visualize a beautiful white light entering into your body from the top of the crown, from the top of your head. This white light is entering. ये सफेद प्रकाश आपके सर के ऊपर से धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है. और जितनी भी थकान आप अभी महसूस कर रहे हैं, वो सारे आपके शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल रही है. Any stress, any tension that you're feeling within your body, any tiredness that you're feeling within your body, it is getting released instantly right now. Just feel that energy is flowing in, helping you to release all the stress, all the tension
from your physical body, mental body, emotional body, and spiritual body. महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये सफेद प्रकाश आपके शरीर की हर एक कोशिका में जितनी भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, जो भी परेशानी आपको महसूस हो रही है, वो धीरे धीरे आपके शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे और आध्यात्मिक स्तरों से, सभी स्तरों से ये परेशानियां, ये बाधाएं पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं. Mentally just say, I am open and receptive to the healings being given by Poonam. पूनम द्वारा दी गई हीलिंग को मैं ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं. And as this light is entering your body, healing every cell of your body, also imagine that this white light is spreading to every part of your life, your health, wealth, relationships, career, and business. So any blockages in your health are getting released. Any blockages in your wealth are getting released. Any blockages in your career or business are getting released. Any blockages in your relationship are getting released. Or any disturbances in any of these areas. कल्पना कीजिए कि ये सफेद प्रकाश आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से जितनी भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उसे दूर कर रहा है. आपकी सेहत, आपके धन, आपके करियर, आपके बिजनेस या आपके संबंधों में जितने भी तनाव आप महसूस कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे पूरी तरह से निकल रहे हैं. And slowly and gradually visualize yourself surrounded by this white light, forming a white ball as if you're sitting inside this white ball. कल्पना कीजिए कि आप इस सफेद प्रकाश की एक गेंद के अंदर बैठे हुए हैं और ये प्रकाश आपको पूरी तरह से चारों तरफ से घेरे हुए हैं. Feel the warmthness and let this light be with you to heal and guide you and protect you. And mentally say, I am present throughout this session and I am open to receive the healings and the new opportunities and the new learnings. मैं यहाँ इस समय इस क्षण इस सेशन में मौजूद हूँ. जो भी नई चीजें मैं सीख रही हूँ, मैं उन्हें ग्रहण कर रही हूँ. जो भी नई संभावनाएं, सकारात्मक संभावनाएं मेरे जीवन में आ रही हैं, मैं उन्हें अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं. Let the divine energies just feel it. And gently, as you're surrounded with this light, thank the white light to be with you for this session, because today we are going to do a very powerful healing and practice for the greatest humanity. महानतम मानवता के लिए आज हम गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हैं और हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम आज बाहर निकालने वाले हैं. इसीलिए आपको इस सेशन में पूरी तरह से मौजूद रहना है. And now gently just open your eyes and give yourself a pat on the back कि आज हमारे आप रेगुलरली सेशंस अटेंड कर रहे हो और आज हमारा 5वां दिन है. So you have like completed more than half of the session because these 7 sessions are going to work at deeper levels. So just congratulate yourself. Reaction buttons use करके अपने आप को तालियां दीजिए, हार्ट दीजिए. Just go ahead and do that. आपके स्क्रीन पे रिएक्शंस का बटन होगा, हार्ट दीजिए अपने आप को. So give it a lot of heart. Yes, thank you, Baljinder. Wow. So with this light, you're going to feel a lot of power. And today we are going to use the power of the greatest humanity. And we are going to do a lot of activity as well. So let me go ahead. And let me go ahead and show you the activity.
and bring this slide for you in terms of what it would mean for us from a greatest humanity perspective. मैं स्क्रीन शेयर करूंगी यहाँ पे महानतम मानवता के लिए हम क्या करने वाले हैं और इसका अर्थ क्या है, ये हम थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा डीपर लेवल की हीलिंग्स करेंगे कि अब तक हमने जो हीलिंग्स की थी वेयर फॉर आवर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी एंड गेटिंग थिंग्स। सो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा शक्ति क्लीन होती जाती है, साफ होती जाती है, वैसे वैसे हम और भी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति अपने वातावरण में फैला सकते हैं। सो इसीलिए आज का जो टॉपिक होगा वो ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी पे होगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी, it includes about compassion, empathy, selflessness. It also talks about fostering interconnectedness among the beings. So when I say among the beings, it is not only just physically between two of us or one to many of the people that we're connecting to, but also to all the human beings, to all the beings which are living and non-living on this planet at this moment in this universe. So we are connecting to all the levels of energies in this whole universe, and whatever, maybe there are multiple universes, so we're connecting to all of those multiple universes with this greatest humanity act that we're going to practice today. Because with this, we are promoting a lot of deeper healings and energies within our body, not only for us, but also for people around. Yesterday, somebody had asked me this question that it was on the WhatsApp, I think after our session, that how do I really make sure things are working well between the people at home or between the friends? I think the greatest part is going to be how do we build that harmony and how do we build that humanity between the people that we are going to be. Remember one thing, each one of us is unique. ये याद रखिए कि हम हर एक इंसान या हर एक चीज जो हमारे आसपास है वो एक यूनिक चीज है और उनकी अपनी खुद की क्वालिटीज रहेंगी. आई नो इट्स डिफिकल्ट टू वर्क इट आउट, हो सकता है मुश्किल है समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी ने तकलीफ पहुंचाई है या हमें किसी ने परेशानी दी है तो सामने वाले की अच्छाई देखना है, सामने वाले की यूनिकनेस देखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं जो हमारा एनवायरमेंट रहा है उस वजह से. सो इसीलिए आज जो हम ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी की बात करने वाले हैं, मानवता के लिए, जहां पे हम दया, सहानुभूति और निस्वार्थता के गुणों को देखेंगे और ये सभी प्राणियों के बीच में आपसी जुड़ाव को बढ़ाने की शक्ति है. और ये हम सकारात्मक ऊर्जा शक्ति से इसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपने वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएंगे, उसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि हमारे जीवन में संतुलन बनता है, हमारी चिकित्सा ठीक होती है, हमारा शरीर जो है, शारीरिक शरीर हो या भौतिक शरीर हो या भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, उन सब में ये समानता आना शुरू हो जाती है. So that's why it's important that when we are talking today about the greatest humanity, we are going to work across on this powerful concept. Now, when we're talking about the greatest humanity, there are three things primarily that's going to be included or that we are going to focus upon. The first one being the compassion. ये हम लोगों ने कल भी देखा था, the greatest compassion. We were talking about करुणा, कि हमारे अंदर वो करुणा किस तरह से जागृत हो सकती है और हम किस तरह से हमारे आसपास के सभी चीजों को ये महसूस कर सकते हैं. So that's why when we are talking about the first aspect of the greatest humanity, which is compassion, remember, compassion forms a fundamental aspect of the greatest humanity, and it encourages individuals to empathize and understand the pain and suffering of others. And that's what we have learned in our previous sessions. And by fostering a compassionate attitude towards oneself and others, healing can begin through supportive
caring and empathetic interactions. Very important. इसका मतलब ये हुआ कि करुणा जो हम बोल रहे हैं वो एक फंडामेंटल यानी मूलभूत पहलू है महानतम मानवता के लिए। और जितने भी हम लोग यहाँ हैं, अगर हम ये सहानुभूति रखते हैं अपने आप के लिए और दूसरों के लिए, तो हम इस वातावरण में वो करुणामय ऊर्जा को फैलाते हैं ताकि लोगों को, हमारे आसपास जो लोग हैं और हमारे अंदर वो प्रोत्साहन निर्माण हो सके। तो ये स्वयं की तरफ भी दयालु रहना है और दूसरों के प्रति भी दयालु दृष्टिकोण रखना है, ताकि हम वो सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। और जैसे से हम इस सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी खुद की जो चिकित्सा है या हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है वो धीरे धीरे बदलते हुए सकारात्मक की ओर जाएगी। I know it is difficult many times, and that's why whatever practices we are doing is going to help you to achieve that level of compassion, the level of acceptance within the society or things that we're talking about. And I'm pretty sure a lot of you would have a question कि ये 7 दिनों के बाद कैसा रहेगा। ये 7 दिनों के बाद आप ये रिकॉर्डिंग्स YouTube पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। और दिवाली के बाद फिर से मेरा एक और फ्री हीलिंग सेशन का सीरीज शुरू होंगे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मेरे नंबर को सेव करके रखिए या फिर आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट सेशन शुरू होंगे आप उसमें आ सकते हैं, ताकि आपको ये परेशानी नहीं होगी कि जो भी मैं अभी सीख रही हूँ या प्रैक्टिस कर रही हूँ ये सेशंस में, आगे चलकर कैसे मैं कर सकती हूँ इन सबको, क्योंकि सिर्फ ये 7 दिनों में मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये 7 दिनों के बाद कैसे होगा। So please do join those sessions as well. Coming back to greatest humanity, second point, which is another important point, it is referred to as interconnectedness, paraspar जुड़ाव. Now, I just wanted to think through, और जैसे मैं बात कर रही हूँ, if there is anything which clicks your mind, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आइडिया आ रहा है या कोई चीजें, ये कुछ जो बातचीत आप सुन रहे हो ये आपके जीवन से कहीं मेल खाती है या कहीं पर भी आपको लगता है कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेटली। So now when we're talking about interconnectedness, it's recognizing that we all are connected to each other with this invisible energies. So recognizing the interconnectedness nature of all the beings is another aspect of the greatest humanity. Understanding that all the life is interdependent fosters a sense of unity and empathy, aiding to the healing process by acknowledging that this profound impact of the individuals is there on each other. Because we all are connected to each other. There is nothing that you can just do all by yourself. If you want to eat food, you need to get the raw material. And to get that raw material, you have to go to the market, you have to talk to somebody, buy that material. How does a shopkeeper get? The shopkeeper gets it from the manufacturer. How does a manufacturer get? Maybe somebody who is creating that raw material. So you see, we all are interconnected. हम सब प्राणी जो हैं इस धरती पर वो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, और ये समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एकता और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है। बहुत मुश्किल होता है ये समझना, और हम जिस सोसाइटी में भी रहते हैं हर कोई ये इसी बारे में बात करता है कि आप इंडिविजुअली किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपने आपके जीवन में अकेले क्या पाया है। पर ये ध्यान में रखना है कि आप अकेले कुछ नहीं पा सकते हैं, आपको आसपास का वातावरण चाहिए। एंड वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड people around, we need things around to support us to become successful. Any and every successful person in this world is not successful all by himself or herself. जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो उनके विजन को, उनके गोल को
अचीव करने में मदद कर रहे हैं। बस फर्क इतना होता है कि किसी ने बड़ा सोचा है और वो उस तरह से एक्शंस ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में वो अपने साथ बाकी लोगों को भी लेकर जुड़ रहे हैं। So that's a very, very important, which is really kind of a very important point. But how to be together with like-headed people? Yes, that's a very important thing, Pratambara. कि हम कैसे रहें उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे मेल भाव या विचार मिलते हैं. It is about attracting the right set of people. And the biggest principle in the energy world is that anybody and everybody around you is there with you to bring a specific thought process. अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अगर वो आपके जीवन में आए हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक विचारधारा लेकर आए हैं जिसे आपको आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, आपके जीवन में इंप्लीमेंट करना है. जब हम बोलते हैं कि हमारे विचार एक दूसरे से मिलने चाहिए, उस चीज के लिए जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी में, जहां पे हम हमारी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति निकालेंगे और हम एक गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करेंगे जहां पे हम कल्पना करने वाले हैं नदी की. वी आर गोइंग टू imagine the flow of river and we are going to connect with the like-minded energies in our visualization and in our healing. So what we are going to do today is we are going to first let go of that negative disconnections, let go of the negativity and disconnect with the negativity and then take it. Yes, about the toxic people. Okay, one very important thing that happens in everybody's life is that when we are surrounded with toxic people, as I was talking in previous sessions also, it is a learning for you or a learning for that person. When I think of just an example, तो अभी जैसे बच्चा है, अगर बच्चा हमारे साथ चल रहा है तो हम अचानक से मना नहीं करते हैं उस बच्चे को कि, और वी डोंट टेल आवर चिल्ड्रंस, अपने खुद के बच्चे या अपने आसपास जो होंगे सोसाइटी में, घर में, हम उन्हें अचानक से बोलते नहीं तुम दूर रहो, तुम मेरे बराबर की नहीं हो तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी. उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे की तरह बन के उसकी मदद करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं. सो वी ट्राई टू लुक एट दैट सिचुएशन मोर फ्रॉम पॉजिटिव एस्पेक्ट and try to bring that child either to our level or we get to that level of the child and help them. Now, in case of toxic people, I'm not saying that you should become toxic, but if that person is coming in your life and you are at a higher level, so generally क्या होता है कि जब toxic लोग हमारे life में आते हैं तो their energies are at a lower level, and because we have been practicing this meditations and healings, our energies go at a higher level. So there is this gap. And then we find a lot of discomfort that starts happening in our life because the energy levels are not matching. Now, what happens is that as you go higher in your practices and as you go higher, the gap increases and slowly these toxic people just exit from your environment peacefully. And that is what I've seen in my life. मतलब मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि जितने ऐसे काफी नकारात्मक लोग थे जहां पे हमारे विचार मिलते नहीं थे और बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता था, बट जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस, जैसे मेरी प्रैक्टिसेस आगे बढ़ने लगी हीलिंग्स में, मेडिटेशंस में और ये कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करने में, ये जैसे जैसे गैप बढ़ता गया, ये लोग धीरे धीरे जीवन से आपके बाहर निकल जाते हैं बिना किसी परेशानी के. ऐसा नहीं है कि आप इनसे बात नहीं करोगे, आप करोगे, बट वो जो नेगेटिविटी है उसका इम्पैक्ट नहीं होता है. आप यू स्टिल कंटिन्यू टॉकिंग टू देम बट द फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस. बट कई बार क्या होता है कि शायद इन लोगों को वो मदद चाहिए है ताकि आप उन्हें आगे बढ़ा सके. सो देन व्हाट हैपेंस इज आई हैव आल्सो सीन पीपल हु स्टार्ट रेजिंग देयर लेवल ऑफ एनर्जीज टू योर लेवल ऑफ एनर्जीज एंड देन यू गो टुगेदर अप. तो आप उस वक्त साथ में फिर आगे बढ़ते हैं और गैप धीरे धीरे कम होता है तो विचार मिलने लगते हैं. बट उसके लिए काफी पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है टू बिल्ड आवर एनर्जी लेवल्स स्ट्रॉन्गर. We have interesting question. Isn't it that at times even toxic people will change with your higher and positive aura? Yes, Vaishali, that is very well possible because that's what I was explaining. Ki certain set of people would be there in your life who are there because you are supposed to pull them up. क्योंकि आपको भी किसी ने ऊपर खींचा है क्योंकि आप तैयार थे.
to move upwards. Similarly, you'll have certain set of people, you're going to put your efforts to pull them up. But if they don't come up with you, the gap will increase and eventually you will move out of the environment or they will move out of the environment. I've seen that happening where it's like people have completely shifted to a different country with their work or whatever has happened, and the gap has reduced, and then the connections and the discussions have reduced because time zone hi alag ho chuke hain. And I've also seen people where they just shift from the place and come and stay within your vicinity, and then you are growing together because you've helped them grow up. So ye cheezein aati hain when our energies get stronger, and we are going to practice that today. Preeti says, agar husband hi hai to kya kare? That's interesting, Preeti. Now, when you're into that relationship, and if it's getting very toxic, obviously you need to look at it to make sure it is not becoming a stressful situation or a very depressive situation, because that will need a different treatment altogether. But from an energy perspective, ऊर्जा से जब हम देखते हैं इन सब चीजों को, so even your husband or your wife or spouse, whoever it is, because there would be guys here, तो आपकी wife होगी या husband है, या to that matter your friends or any other relatives, तो उस केस में क्या होता है कि when your practices are getting stronger, you're pulling those set of people who are close to you, raising their vibrations as well. Now it can happen reverse as well, क्योंकि अगर उनके vibrations negative vibrations ज्यादा strong है और आपने आपकी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति को उतना strong नहीं किया है, तो आप उसमें खींचे हुए जा सकते हो, and then you can come down as well. And that is the precise reason that I say that we have to be like you need to kind of be a part of these sessions and listen to the recordings and all, so that you always keep your level of energies higher. Otherwise, what happens is that इनके energies ज़्यादा strong होंगी, so they'll just pull you down, and then you get mixed into that. And it can be anybody, it can be your friends, family members, relatives, anybody. And that's why the practices which we're doing are helping us to clear our energies to make sure we are getting more positive and getting more stronger. Great. So then when we move on to the next part, because when we are talking about the interconnectedness, परस्पर जुड़ाव, तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, and that's the basic human aspects and the life that we are living on this planet. We cannot obviously survive all by ourselves. We need people, or we need the nature, we need something around us to be there with us. And then the last one is selflessness and support. And when we talk about the selflessness and the support, now a lot of you might be thinking, why am I explaining you this? This is important because now when we're going to do after this third concept, you understand when we're now going to do our activities and when we're going to get into the meditation part, it is going to help you heal at a deeper level because you need to understand that concept. So when we talk about this selflessness and support, it's about involving yourself. While you take care of yourself, you are also taking care of the needs of people around you at the same level. ये बहुत ध्यान रखिए, and this is my perception of the way I have seen things is, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी जरूरतों को पीछे रख के बाकी सबकी जरूरतों को पूरा करते हुए जाते हैं, be it men, be it women, be it anybody, right? Then you become very negative about yourself कि मैं अपनी चीजें या अपना जो मुझे करना है वो मैं कर नहीं पाती हूँ और आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, right? So what we are saying is कि when we are talking about selflessness and support, it should go in parallel, which means आप अपनी भी जरूरतों का ध्यान रखें, साथ में दूसरों की भी रखोगे, and it should go in level. ऐसे नहीं कि मैं अपनी रखूंगी तो बाकियों की नहीं रखूंगी, या सिर्फ दूसरों की रखूंगी और अपनी नहीं रखूंगी. So we're talking about keeping the support for ourselves and to others in parallel. And it means that you're supporting, generous, you are kind, practicing all of what we have spoken about, and creating an environment of mutual care and understanding. Now, when I say creating an environment of mutual care and understanding, this doesn't mean that you're not going to get angry. This doesn't mean that you're not going to get irritated. But the impact of that anger, the impact of that irritation, the impact of that frustration would be only minimal.
मतलब अगर पहले आप इतना ज्यादा गुस्सा होते थे, दिनों दिनों तक गुस्सा रहते थे, महीनों तक रहते थे, ये प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे वो कम होगा। आप गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ापन भी आएगा, सब आएगा, बट फ्रीक्वेंसी कम होगी, इम्पैक्ट कम होगा अपने आप की लाइफ पर भी और दूसरों के लाइफ पर भी। इसलिए निस्वार्थता और समर्थन की जब हम बात करते हैं तो हम अपने बराबर ही दूसरों की भी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, और ना ऊपर ना नीचे, जहां पर भी आपको पॉसिबल है, जैसे भी आपको पॉसिबल है, आप दूसरों की मदद करोगे। और समर्थन, उदारता, दयालुता, ये सारे भाव आप आपके अंदर जागृत करोगे। कैसे होंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ये एक दिन में नहीं होगा। शुरुआत के दिनों में आप जैसे से प्रैक्टिस करोगे तो अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है वो बाहर निकलेगी। कल ही मुझे किसी ने मैसेज किया था, आई डोंट नो इफ दैट पर्सन इज हियर, बट उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत गुस्सा महसूस हो रहा था, अपने आप पे आ रहा था गुस्सा, हर किसी पर गुस्सा आ रहा था, सब जो भी सामने दिख रहा था उन पर भी गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि शायद मुझ पर भी गुस्सा आ रहा था। सो इट वाज लाइक कि बहुत ज्यादा था, बट जैसे से प्रैक्टिस की तो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि आपके अंदर जितनी भी दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है उसे हम क्या कर रहे हैं, इन हीलिंग्स के द्वारा हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। सो यू आर एम्प्टिंग योर इनर, I would say, problems, inner blockages, and we are then creating a space to welcome the good things. So ये बहुत ही चीज ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे बोलेंगे कि यार जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से मैं और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, तब से और भी ज्यादा मेरे अंदर नकारात्मकता बढ़ चुकी है, क्योंकि वो जो आपके अंदर दबी हुई चीज जो थी ना, आपने अभी तक छुपा रखी थी, वो बाहर निकलेगी। और काफी लोगों की सकारात्मक ऊर्जा शक्ति भी निकलने लगेगी बाहर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी नकारात्मकता कम होगी वैसे वैसे सकारात्मक चीजें भी बाहर आना शुरू होंगी, और उसी तरह से आपको धीरे धीरे जो माहौल बनाएंगे वो कल्याण और सद्भाव का बढ़ने लगेगा। ये जो कंसेप्ट्स हैं तीन हमारे ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी के, कंपैशन, करुणा, इंटरकनेक्टेडनेस, परस्पर जुड़ाव, सेल्फलेसनेस एंड सपोर्ट, निस्वार्थता और समर्थन। Now with these concepts we are going to go into our activity. अभी आप सब लोगों के पास ब्लैंक पेपर ऑलरेडी होगा आपके हाथ में। अब आप पेन ले लीजिए और उस ब्लैंक पेपर पे हम लोग हर एक एरिया के 2 या 3 नेगेटिव चीजें जो आपको लगती हैं, या ऑलरेडी अगर आपके दिमाग में है कि मेरे लाइफ में ये ब्लॉकेजेस हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है, और ये नकारात्मक घटनाएं हैं जो नहीं चल रही हैं, या मैं इन सब चीजों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वो आपको आपके इस पेपर पे लिखना है। सो गो अहेड, राइट डाउन। फर्स्ट थिंग इज द हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज important. Unless and until you have a healthy life, it will be difficult for you to move on forward, right? Health बहुत important है, so write down health। और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में हैं, या ऑलरेडी आर सफरिंग फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स, देन गो अहेड एंड राइट दैट। I want to learn to let go with negative people and negative situations. Yes, Kavita. So do that same process that we are going to do right now. Yeah. So health से related आपको जो भी नेगेटिव चीजें या नेगेटिव सिचुएशंस याद आ रही हैं तो आप लिख सकते हो। ये डायरेक्टली आई वुड से मोर देन नेगेटिव पीपल, इट इज अबाउट द सिचुएशन। So write about the situations, क्योंकि वही इंसान आपके लिए नकारात्मक होगा, किसी और के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, right? So it is because of that situation that we are reacting negative, क्योंकि हो सकता है कोई आपको बोले कि अरे आप कितने नेगेटिव हो, but then you start realizing अरे मैं कहाँ नेगेटिव हूँ। When I talk to you I become negative because I feel that negative energies. आपसे बात करते वक्त ही मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। और आप सभी ने किसी ना किसी को जरूर कहा होगा कि जब आप दूसरों से बात करते हो, दूसरों को मिलते हो तो बहुत ही खुश रहते हो, बट मेरे से बात करते वक्त हमेशा पता नहीं क्या हो जाता है कि हमेशा चिड़चिड़ापन होता है। आई सी कविता स्माइलिंग, राइट? ये हम सब ने किसी ना किसी को कहीं ना कहीं हर बार कहा है। ये भी होता है, बाहर तो आप बहुत अच्छे से रहते हो, घर में आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, राइट? बिकॉज दे विल बी लाइक अरे घर में पता नहीं, because that equation of energies is negative. So it's not the person, the situations and events is what we're trying to focus on.
सिचुएशंस कैसे, लाइक हो सकता है कि क्या होता है कि जैसे आपको कुछ चीज पसंद है, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फूड, सिंपल चीज होती है क्योंकि खाने को लेकर हर किसी के यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानियां चलती हैं। तो आपने कुछ बनाया क्योंकि आपको वो चीज पसंद है, सामने वाला आपको बोलता है ये क्या बना लिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। So that's a situation about food. You cooked dal rice, but the front person does not like the dal rice. They are like, नहीं मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे लिए रोटी नहीं बनाई, या मेरे लिए पिज्जा नहीं बनाया। बच्चों का ये रहता है ना कि यार ये नहीं, ये सब्जी नहीं खानी, आपने पिज्जा नहीं बनाया मेरे लिए। So that itself creates that negative thing. और ये अगले 2 3 4 दिन रिपीट होगा, then the 5th day the person will already get angry कि अरे ये क्या है मम्मी, आप मेरे पसंद का खाना नहीं बनाते हो। And that negativity starts expanding. And I've seen where kids start building that impression कि यार मेरे पसंद का खाना बनाते ही नहीं कोई घर पे, तो मुझे बाहर से ऑर्डर करना है। Of course, as a mother, you might be doing it for their health, but then they don't realize, they're like, नहीं मेरे पसंद का नहीं बनता है। So that kind of situations could be there where you have felt negative emotions. तो ऐसे अगर situations है जहाँ पे आपने नकारात्मक ऊर्जा शक्ति महसूस की है। Yes, go ahead, Ritamra. If you have any question, unmute. Okay, I need to unmute. Ask you to unmute. Yes, go ahead and unmute. Sorry. Yeah, I'm a little confused, so wanted clarity before writing it. Yes, tell me. So we have to write in each aspect, like greatest love, golden light, and everything like No, that. health, wealth, relationship, and career. Okay. We are going to Okay. write it from that perspective. कि Okay. health में So कोई diseases हैं या कोई problems हैं, then you write that. and it can be any number of situations or Yes, it only can be one any or number two? of situations. Oh, So right now you can thank you. write 1 or 2 situations because you understand the process and then later you can practice it. Yeah, good. Thanks for asking that and getting the clarity. So health से related अगर कोई आपकी परेशानियां हैं, if you have any diseases or any health issues, write that down because you want to get rid of those, right? So write that कि health से related मेरा सर दर्द हमेशा होता है, पेट में प्रॉब्लम है या हाथ पैर दुखते रहते हैं, whatever it is. Then is the wealth part. In wealth, it could be कि okay, I'm earning but I'm not able to save money, or I have this much rupees with somebody and my money is stuck, or there is no income which is happening. So health, wealth, then your career or business, maybe there are no new clients coming, I have no clarity about my career, I'm not moving in my job, or I'm stuck in my career or stuck in my job, or I'm not having good opportunities coming for me in my career or in my business. No breakthrough ideas are coming in, so I'm stuck with the newer ideas. So whatever you're stuck with, the health, wealth, career, business, and then relationships. So it would be like, okay, my relationship with self is not good. My relationship with my parents is not good. With spouse is not good. With family members, with kids, जो भी है, जिनके साथ भी आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रही है. So go ahead, write that down. Okay, so Shweta says, so go ahead and write that situation, that because the intention will also play a very important role. So go ahead, write that situation, that since this situation, I'm having a lot of money loss. So a lot of money loss in my life. Go ahead and write that. So when you're ready, just type D in the chat window. Then I know that you all are ready and you have done that.
Thank you, Ritamra. Because thank you, Reena. Thanks, Jyotsna, Tirtha, Vaishali. Awesome. Mansi, Smita, Preeti, Vaishali. Thank you. Awesome. A lot of them have been almost done. Thank you, Sachin. Okay, great. Now, what you have to do is we are going to feel the energies. Okay, fold that paper completely. Hold it between your palms like this. And let's release an intention to let go of this negativity. Okay, yeah. Now we're just going to say, "Ki, I release all these negative energies, negative thoughts, and negative patterns right now from my life and from all the areas of my life. यहाँ इस समय इसी क्षण से ये सारी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति को मैं पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे सारे जीवन के क्षेत्रों से ये नकारात्मक ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से जा चुकी है। Physical, mental, emotional, and spiritual bodies, I release this negativity. शारीरिक, मानसिक, भौतिक और भावनात्मक शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से जा चुकी है। And just feel the energies and mentally just say release, 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 release. Now open your eyes, take the paper very safely, put it into the, you can tear it, that's easier. Just tear it into 4 pieces and feel the joy of the negative energies moving out. Put it into the bowl, keep it in a very safe place and burn it out. Again, we are using fire because fire is the common medium between our wishes to the universe. Fire हमारे सारे सभी जगह पर अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी हमारी चीजें होती है बोलने की, वो यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, तो हम ये मैसेज अब यूनिवर्स को पहुंचाने वाले कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति इसको जला दीजिए। So just burn it and do it very safely. Burn this, burn all the paper. Do it very safely, okay? And it's kind of burning out here completely. ये पूरी तरह से जल के जब राख बन जाएगी तो इस राख को आप फ्लश कर सकते हो या कचरे में डाल सकते हो। But do it very carefully. Let everything get burned out completely. And just look at it burning and mentally just say release, 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 release. Yes. And then you can keep it aside ताकि वो पूरी तरह से जल जाएगा. And now we will get into the powerful healing to connect with the universe for the greater humanity. क्योंकि अभी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति जा चुकी है, तो we have to bring in the lot of positive energies within us. So I want you to just be comfortable with your palms facing upward, with your eyes closed. Feel the energies on your palms. आंखें बंद कर लीजिए comfortably. So this meditation is the imagination of a flowing river to help us visualize the interconnectedness and healing among all the sentient beings, among all the beings, fostering a sense of unity, compassion and love for the world around us. ये ध्यान एक बहती हुई नदी की कल्पना का उपयोग करता है, जिससे आपको सभी संवेदनशील प्राणियों के बीच परस्पर जुड़ाव और उपचार की कल्पना करने में मदद मिलती है, जिससे हम आसपास की दुनिया के लिए एकता, करुणा और प्रेम की भावना
को बढ़ावा देते हैं. Mentally just say, during this whole process, I'm open and receptive to the healings being given by Poonam. Yes, mentally just say, I'm open and receptive to the healings being given by Poonam throughout this session. And let us feel it. Envision yourself by the banks of a tranquil, pristine river. And this river symbolizes the flow of compassion, healing, and interconnectedness amongst all the beings. एक शांत नदी के किनारे स्वयं की कल्पना करें कि आप वहां बैठे हैं एक नदी के किनारे. ये नदी सभी संवेदनशील प्राणियों के बीच करुणा, उपचार और परस्पर जुड़ाव के प्रवाह को बढ़ावा देती है. ये नदी उसका प्रतीक है. If you're not able to imagine or think of it, that's okay. Just mentally say that yes, I'm sitting near the river. अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, बस मन ही मन ये दोहराएं कि हाँ, मैं एक बहुत ही शांत नदी के पास बैठी हुई हूँ और ये नदी दर्शाती है महानतम ह्यूमैनिटी को, महानतम मानवता को. Now imagine and picturize yourself dipping your hands into the clear water. ये नदी का पानी बहुत ही साफ है और आप इसमें अपने हाथों को डुबोते हुए स्वयं की कल्पना करें. बहुत ही प्यार से आप इस नदी के पानी को छू रहे हैं. As you touch the river, feel a warm, gentle energy emanating from it. जैसे ही आप इस नदी के पानी को छूते हैं, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही कोमल ऊर्जा इस नदी के पानी से निकल रही है और आपके हाथों को छू रही है. With each touch, sense this energy permeating through your being, filling you with a profound sense of peace and empathy. प्रत्येक स्पर्श के साथ, नदी के स्पर्श के साथ आप महसूस कर रहे हो कि ये कोमल ऊर्जा आपके शरीर को छू रही है. आपके अस्तित्व में प्रवेश करते हुए महसूस कीजिए कि आपके मन को शांत कर रही है. और ये नदी का पानी जैसे आप छू रहे हो, ये आपको पूरी तरह से शांति और सहानुभूति से भर रही है. You're feeling very light and full of peace and compassion. आप महसूस कर रहे हो कि आप पूरी शांतता से और करुणामय हो रहे हो. धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आप अपने हथेलियों से इस पानी को ले रहे हैं अपनी हथेलियों में और धीरे से आप इस पानी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं. Visualize that you're taking the water from this river and slowly throwing it upwards. It's just like branching out to encompass all the corners of the world. महसूस कीजिए कि जैसे आप इस पानी को फेंक रहे हैं तो ये दुनिया के हर एक कोने में पहुंच रहा है. आप फिर से आपका हाथ पानी में डालिए. And as you put your hand again back in the water, there is a ripple happening in the water and it represents the individual beings, human beings, animals, plants, and all the forms of life. जैसे ही आप आपका हाथ फिर से पानी में डालते हैं, पानी में ये एक लहर उठती है और ये हर एक लहर इस व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है. मनुष्य, जानवर, पौधे और जीवन के सभी रूप को आप इस लहरों में देख रहे हैं. In this ripple of the water, you are visualizing every being of the life. And as you are touching this water, focus on your breath. With each breath, imagine that you're infusing the river's water with healing energy and compassion. Healing your health, wealth, relationship, career, and business at physical, mental, emotional, and spiritual level, not only for you, but for everyone around you.
And as it flows, it touches the lives of all the beings. It encounters bringing comfort, healing, and a sense of interconnectedness to everyone and everything. प्रत्येक सांस के साथ आप कल्पना कीजिए कि ये पानी एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, और जैसे ही आप इस पानी को छूते हैं, उसकी उपचारात्मक शक्तियां और करुणा भर स्वभाव जो है इस पानी का, ये आपके शरीर में हर एक कोशिका में फैल रहा है। आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर एक शरीर, हर एक स्तर पर आप इस ऊर्जा शक्ति को महसूस कर रहे हो इस पानी की। और आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन सब जगह पर आप इसको महसूस कर रहे हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पानी का बहाव आप महसूस कर रहे हो, ये उन सभी प्राणियों के जीवन को छूते हुए जा रहा है। आपके आसपास के सभी प्राणियों के जीवन छू रहा है। और इस पानी की लहरों से हर एक वो चीज जो इस पानी को छू रही है, वो बहुत ही आराम महसूस कर रही है। और हर एक जीवन एक दूसरे के साथ एक परस्पर जुड़ाव महसूस कर रहा है। वो भावनाएं ना कि सिर्फ आपके शरीर में, बल्कि हर एक चीज जो आपके आसपास है उसमें ये बहाव आप महसूस कर रहे हो। Allow yourself to merge with this river of compassion and sense that you're not separate from it, but a part of this expansive flow of love and healing, and feel the joy and peace that comes from this river. अपने आप को करुणा की इस नदी में खो जाने दीजिए, पूरी तरह से खोने की अनुमति दे दीजिए। ये कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि आप इस नदी से अलग नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर भी वो प्रेम, वो करुणा बह रही है, जो ना कि आपको आनंदित और खुश रख रही है, बल्कि आपके आसपास जितने भी जीवन हैं, जो भी चीजें आपके आसपास रखी हैं, वो सब ये महसूस कर रही हैं। You're one with this river. And now let's take a moment to express our gratitude for this experience to the river, and offer all your well wishes for the healing and happiness of all the people, all the sentient beings touched by this river of compassion. कल्पना कीजिए कि नदी ने सारी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से बाहर निकाल ली है, और ये आपके अंदर बहते हुए सभी प्राणियों के प्रति बिना कोई शर्त रखे ये सकारात्मक ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से फैल रही है। ये सिर्फ ना कि आपकी भलाई कर रही है, बल्कि आपके आसपास सभी की भलाई कर रही है, सभी को सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दे रही है, सभी को सुकून मिल रहा है। We all are connected with this peace, joy and happiness. और आपके जो भी क्षेत्र हैं जहां पे आप देखना चाहते हैं कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति हो, पॉजिटिव ग्रोथ हो, so any areas that you feel that you should have that positive growth, just bring that in front of you right now. And visualize through your hands, you're sending all that positive energies, maybe if it's your health, if it's your wealth, it's a career, business, whatever it is. For a few seconds, feel the energies flowing from your hand. A lot of you might feel the energies, warmthness. काफी लोगों को गर्माहट महसूस हो रही होगी. And gently say, thank you, thank you, thank you. I come back to the room that I'm in. Come back to the room that you're in. जहां पे आप अभी हैं, जिस कमरे में आप हैं, वापस वहां पे आ जाइए और धीरे से अपनी हथेलियों को मसाज कीजिए. Rub your palms, massage your face, your forehead, your neck, your throat, thighs, knees, ankles, everything. Just go ahead, feel that energies. And with a very big smile, let the humanity flow with love and kindness. Awesome.
So how did you feel? Go ahead. कैसा लगा? Unmute करके share कीजिए. Chat window पे share कीजिए. I hope you are enjoying and you were able to let go of this whole negativity around you. Yes, Yogita, go ahead. I felt very much relaxed and peaceful, Mhm. and I felt as if I got mixed with the river water. That's nice. Yeah, Awesome. That's a good feeling, Yogita. Thanks for yeah, sharing. yeah. Thank you so much. Thanks. Yes, वैशाली बोलिए कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा फील किया कि जैसे मैं नदी के किनारे बैठी हूँ और मैं सैंड पे बैठी हूँ और नदी का पानी मेरे को टच कर रहा है और मैं पूरा मेडिटेशन कर रही हूँ। Wow. बहुत अच्छा लगा सेशन। Good. Thanks, Vaishali. Thank you. Okay. Pratibha says feeling good. Sachin says wonderful session once again. Lot of gratitude. Thank you, Sachin. Dipali says really fantastic experience. And Jyotsna says river water concept was amazing. Very nice. Thanks, Jyotsna. Thank you. Baljinder says felt shaking while doing this. It was energetic with flow of water. So Baljinder, if you felt like you were shaking, just look at which part of the body you felt the energies. Because हो सकता है कि शायद वो शरीर के उस भाग में या उस चक्र को आपको ज्यादा हीलिंग देने की जरूरत होगी. So just focus on that part. Kavita says too much peaceful. Awesome. Go ahead, Baljinder. बोलिए. Ma'am, on the back, lower back. Lower back you felt. Okay, so root chakra is something which you have to definitely focus on. Mooladhara chakra पे ज़्यादा से ज़्यादा healing time दीजिए, because Mooladhara chakra is survival, financial, material things and physical health. तो ये चार चीजों पर आपको ध्यान देना है और मूलाधार चक्र पे फोकस कीजिए healing के लिए. Okay, ma'am. Thank you. Great. Yes, Ritambra. I was lying down in the riverbed and Wow, I was just flowing with the water and felt so peaceful. Thank that's you really so much. nice. Great. I hope you're feeling much lighter now then. Yes, very much light and peaceful. Awesome. Yeah. So, Jyotsna, ideally, the live sessions would always be good, but if you're not able to, then listen to the recorded, because kuch nahi se acha kuch to hai is what I would always say. So, listening to the recorded sessions would also help you. And if you can listen to them always and as many number of times, it's definitely gonna work out. Okay, Urmila says river experience was great. Thank you. Tita says my hands and feet were really cold, not only water, but even the fish were playing with my feet. Oh, that's such a nice thing. Good. Thanks, Reena. Nice concept of river, water felt calmness. Yes, Shweta, go ahead, speak. Unmute yourself. Yes, ma'am. Like when you said dip your hands in water, so I could feel the energy over there. That everything is so clear and so beautiful, and all the good things are coming to me very easily. And then I could imagine myself like I am under a waterfall, and with that sound of the waterfall, I'm able to heal my worries, and with that pressure, all the worries are letting go of, and then good things coming into my life. That's really nice, Shweta. That's awesome. Great. Yeah, Kavita. So as I said, ki, rather than focusing on letting go of things right now, let us focus on what we are wanting, because what that's my basic aspect, or wo jo cheez main follow karti hu, kyunki what happens is ki when you are focusing on letting go of things, then your energy is going more on letting go than focusing on what I want or how I want. So the better way is कि जब आपका दिमाग क्या चाहिए उस पर आप अगर फोकस करना शुरू करते हो, तो ये लेटिंग गो ऑफ चीज के लिए आप परेशान नहीं होते हो. So you have to replace that. It is just like if you want to eat, what do you like eating, Kavita? Let me ask that. What's your favorite food? Idli sambar. So Kavita, when you are focused on preparing idli sambar, do you think of preparing parathas? You don't, right?
So you don't worry कि how do I let go of the paratha from my mind? नहीं, मेरा ध्यान इडली सांभर पड़े तो मैं उसी को बनाने के लिए फोकस करूंगी. So उसी तरह से, because I also like I know it is difficult क्योंकि मैं भी शुरुआत में यही सोचती थी कि मुझे let go of करना है, forgiveness करना है, ये करना है, पर मेरी एनर्जीज वहां पे फोकस हो रही थी. Then with practices and then doing a lot of different sessions and all, I started realizing कि okay, मेरे पास और कुछ सोचने के लिए नहीं, इसलिए मैं इस चीजों पे सोच रही हूँ कि फोकस कैसे इन चीजों को जाने दो. बट जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है, and if I'm focusing on that, automatically you forget what you have to even let go because you know where you want to be there. तो वैसे ये याद रखिए कि अगर इडली सांभर खाना है तो उसी पर ध्यान देते हैं हम, उसी का प्रिपरेशन करते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं कि पराठे को कैसे जाने दें या पराठे की चीजें हम दूर रखें. We don't do that, right? So that's how you focus on, and automatically you will realize you already let go of all so many things. Yeah. So just try practicing that and let's work it out and see. Okay, Vaishali says, feeling relaxed, felt like I have touched silky cold water and those water drops entered into others' life, could imagine everything and everyone was super happy with smiling faces. Thanks, Vaishali. Yes, Shweta, that is easier. कि जो चाहिए उस पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो नहीं चाहिए वो चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता है. बट ये बहुत जरूरी है कि क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं कि मुझे तकलीफ नहीं चाहिए मेरे जीवन में, बट एब्सेंस ऑफ पेन और एब्सेंस ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी, व्हाट वुड दैट मीन? Yes, Vaishali, I'll do that. Give me a few minutes, we'll do that. Yeah, Yogita, you have something to ask? Yeah, I also wanted to tell you that when we were talking about this river and all those things, that time all those people whom I was connected to, they were also immersed in the same water. That's what I could see. Visualize. That's nice. Means maybe those people were good, they were not treating me well or whoever. But when you told that, all the human beings connected to us, they were also immersed in the same water as I was immersed. Right. So that also experience I had. That's nice, Yogita. Awesome. So a lot of you would feel these changes and shifts. So the key thing is that you'll feel the effects of it even after a couple of days. And that's the most important part. Yeah, Shweta, flush the ash or blow it in the air. That's okay. Yes, Baljinder, it will take time of whatever you are thinking of to get realized, because you have to let go of a lot of your emotional blockages first. And remember one thing, कि जब हम बोलते हैं कि we want certain things, there is a higher divine energy and universal energies which are thinking of you, and you just have to be at times be open to say like, okay, whatever I'm asking has to be in alignment with the universal flow. That's very important. Because sometimes when it is not in alignment with the universal flow, it may be delayed, or you may not get it, or you may feel like, oh, there's something negative happening. So just a little patience is the key thing, is what I've realized in all of these things. Awesome, great. So if no further questions for today's session, then I will kind of stop the streaming and the recording. And then... Can I interrupt? Yes, Shweta, go ahead. Ma'am, like you said, like you have to focus on what you want. So how are the sentences like we will be framing? Like, is it already happened, or I want this? How to frame it? So generally, Shweta, we frame those sentences in more of a positive present tense. Like, for example, what is that you're looking for? If you can give me an example, I can take that same. For example, if we think of relationship, so I am having a positive relationship with my parents, or how to feel like. Yeah. So in this case, Shweta, it would be like I'm having a loving and respectful relationship with my parents. Okay. You see, with anybody, the relationship will not be always with positivity. Because हर किसी का जब, when there are two people, when there are three people, there would be differences of opinion. There would be situations where you may not like what they're saying. They may not like what you're saying. So some
frictions would always be there, but the idea is that वो frictions कम हो या उसका impact कम हो. ठीक है, अभी friction है, लेकिन that doesn't mean कि for days and days we are not talking or we are carrying that anger. Right now our views don't match, fine, absolutely okay. But then the next moment you come back and talk to each other with respect and with love. So that's how I would look at it. It should be that I'm having loving and respectful relationship with parents or whoever you want to replace it with. Okay, ma'am. Thank you. Because that acceptance has to be there. क्योंकि दो लोग हैं तो definitely views बहुत सारे situations होंगे जहाँ पे match नहीं होंगे. But you just have to work that out. Yes, I'll do. Great, thank you. Yeah, Baljinder, you have something to ask for today's session? Yes, ma'am. Few minutes back you said that maybe as per the situation it will get realized or it will not get realized. But Right. it happens, however. We are just saying that we want that and it doesn't happen. So in that case, what can we do? How to come out that it is not going to happen and we have to stop there? So that's why I'm saying ki, we have to look at the higher perspective out here, Baljinder. We don't have to stop thinking of those aspects. But whatever is the best is coming to me is what you should focus on. Yeah, so I would generally talk to you about thinking from that aspects to look at things. Yeah. But ma'am, how can we feel that, okay, this is not going to get materialized, so should I stop working on You it? just see, something when indication. you're trying to manifest things, you don't have to run behind a lot with it. You have to just think of it and leave it. Because your impatience at times results to a lot of anxiety, stress for you, and then you're not working towards the actions for it. So there is nothing like you have to, it's not, whether it is going to manifest or not, it is going to manifest today or is it going to manifest after 10 years? Nobody would know about it. It's not that simple or that easy to just calculate and say like, yo, this is what I'm thinking and this is how it goes. There are a lot of processes. There is a lot of alignment that has to happen with your thoughts, with your actions, with your feelings, with the universal aspect of things. And when you start aligning all of these things together is where the manifestations and a lot of those things start happening. So right now, in your case, I would just say that just think of it and leave it. Don't stress yourself whether this is going to happen or not happen, or why is it not happening? Whether will I get to know whether it is going to happen or not? Right now, not too many questions. Just practice the basic aspects of things is what I would recommend to you, Baljinder. Okay, thank you very much. Don't stress a lot because that is going to cause you more problem. Okay, thank you. Yeah. Yes. Okay, awesome. Thanks. Okay, any further questions? I see something in the chat. Thanks, Baljinder. Okay, great.